Assalamualaikum students, hope you are all fine by the grace of Allah Almighty. So हम लोग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे. So there are 12 types of matrices. So total there are 12 types. Now in this class we only discuss first 4 types of a matrix. So the first matrix is रो मैट्रिक्स. तो हमारे पास जो टोटल टाइप्स हैं मैट्रिसेस की वो हैं 12, लेकिन आज की वीडियो में हम पहली 4 टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो. अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो. कोई भी मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो. रो एक होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हों, लेकिन अगर रो एक ही है तो हम उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स. इसी तरह हम कॉलम मैट्रिक्स में देखेंगे. रो मैट्रिक्स में एक रो होती है और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है. रो जितनी मर्जी हो सकती हैं. तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम. फॉर एग्जांपल m इज इक्वल टू 2 - 1 7. सो इट इज़ अ कॉलम. It has one column. So it is 1/3 matrix and it is 3/1 matrix. So the row is 1, here the column is 1. Okay. In row matrix we have only one row and in column matrix we have only one column. Now the third टाइप इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मीन्स के इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कॉलम्स हैं वो इक्वल नहीं होंगे. अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स. फॉर एग्ज़ाम्पल बी मैट्रिक्स है हमारे पास. इसमें देखिए हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स है हमारे पास 1 2 3 1 2 3. So number of rows are 2 and number of columns are 3. number of rows हमारे पास है 2 और number of columns हमारे पास हैं 3. तो 2 rows हैं और 3 columns हैं. 2 is not equal to 3. रो और कॉलम्स आपस में नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, तो हम कहेंगे ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. उसके बाद चौथी है हमारे पास, फोर्थ है स्क्वायर मैट्रिक्स. अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ सेम होंगी तो हम इसे कहेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. जैसे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं. ये एक 2/2 मैट्रिक्स है. ये 2 रोज़ और कॉलम, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में सेम है, तो हम कहेंगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. Hope you understand all the definitions. Now I want to give you tricks how to remember these types or revise in 1 second. So for row matrix you have to रो मैट्रिक्स के लिए यू हैव टू remember the trick 1 row. For column matrix
You can only remember that in row matrix there is only one row, in column matrix there is only one column, in rectangular matrix row is not equal to column, number of rows are not equal to column, number of rows और column आपस में equal नहीं होंगे, and in square matrix number of rows are equal to number of columns. So in short form you only learn these tricks and resolve the questions in a second.